Hello everyone. In this video, we are going to learn an example of Slr parser. So before we dive into the example based explanation of Slr parser, please check out the previous video that is uploaded in Compiler Design playlist where we covered the fundamental concepts and steps involved in Slr parser. You can find the link in the description below also, or you can directly check out the Compiler Design playlist. So हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं बिकॉज देर इज एन चेंज इन प्रोडक्शन लाइक A टेंड्स टू नल एंड B टेंड्स टू नल. अगर ये ऐसे प्रोडक्शंस आते हैं ग्रामर में तो आपको क्या करना है, वो प्रीवियस एग्जांपल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट this each and every steps are explained in that previous video. So first watch that previous video, then come to this video so you will understand better. These are the steps to construct Slr parser. The first step will be create an augmented grammar. Second step, construct canonical set of LR 0 items. If it is in CLR, then you have to construct the canonical set of LR 1 items, but in SLR you have to construct canonical set of LR 0 items. What was the third step? Compute the follow function. This method comes under bottom up parsing. Okay, so you don't need to remove left recursion or left factoring. Okay, left recursion and left factoring are removed in top down parser. This method comes under bottom up parser, so you don't need to remove the left recursion or left factoring. You directly construct or compute the follow function. Then fourth step will be construct SLR parsing table. Exam में हमें यहीं तक पूछा जाता है, to construct the SLR parsing table for the following grammar. Okay, पार्स करने को नहीं पूछा था बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम एंड द एग्जाम्पल विल बी लार्ज. दैट इज द रीजन हमें सिर्फ स्टेप नंबर 4 तक ही पूछा था. फिर भी हाउ टू पास द गिवन स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ एसएलआर पासिंग टेबल आपको स्टडी करना है तो यू कैन वॉच अवर प्रीवियस वीडियो. ओके, इन दैट वीडियो वी पास द स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ एसएलआर पासिंग टेबल. ओके, लेट्स सी नाउ हाउ टू क्रिएट ऑगमेंटेड ग्रामर. देन स्टेप नंबर 2. So here our starting symbol is capital S. Okay. So in step number 1, how to create augmented grammar. If your starting symbol is S, then you simply introduce a new non-terminal, that is S dash tends to S. If your starting symbol is capital A, what we have to do? A dash tends to A. Is that clear? Okay. Then S tends to S-AaAB, S tends to S-BbBa, A tends to null, B tends to null. Rest of the production you have to write as it is. Is it clear? So augmented grammar is very simple. If you have a starting symbol S, then you have to simply write S dash tends to S. We have to introduce a new non-terminal. If your starting symbol is capital Z, then simply you have to introduce Z dash tends to Z, nothing else. Okay. Now the step number 2 is canonical collection of LR 0 items. Now items means that dot. इसलिए मैंने कहा प्लीज वॉच दैट प्रीवियस वीडियो. डॉट का मीनिंग क्या है आपको पता चल जाएगा. अगर डॉट एस के पहले है दैट मीन्स व्हाट, हमने एस को एग्जामिन नहीं किया है. अगर डॉट एस के बाद है दैट मीन्स व्हाट, हमने एस को एग्जामिन कर लिया है. अब आप इस एस को रिड्यूस कर सकते हो एस डेस से. सिमिलरली अगर ए के बाद यहाँ पे डॉट आता है कैपिटल ए के बाद, दैट मीन्स व्हाट, दैट ओनली कैपिटल ए इज एग्जामिन्ड. दिस 3 symbols are till pending. Okay, they are not examined, so we are not able to reduce this this right hand side with the help of this left hand side, that is capital S. If in the right hand side if dot अगर यहाँ आ जाता है b के बाद, small b के बाद, that means what, we are examining everything. So whenever we have to reduce a capital A and B, we can simply reduce with the help of S. Okay, so first canonical set of LR 0 items. तो हमें क्या करना है, you have to introduce I0 is equal to S dash tends to dot S. Simply you have to put dot in the previous of S. अगर वहां पे A होता तो आपको सिंपली क्या लिखना था, डॉट A. अब डॉट S ऑन द राइट हैंड साइड, डॉट अगर किसी नॉन टर्मिनल के
आगे आता है तो आपको क्या करना है, what we have to do, if this dot will come before the non-terminal, then the productions, how many productions of S will be there? There are 2 productions of S. Okay, you have to write it in the I0 including dot on the right hand side. So what is the production? Next production, S dash tends to dot S-AaAB. Next, S dash tends to dot S-BbBa. Now you can see, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने ये प्रोडक्शंस लिखे तब नॉन टर्मिनल कैपिटल ए के आगे भी डॉट आ गया. So that is the reason we have to write here the production of A also and the production of B also. हमें B के प्रोडक्शन और A के प्रोडक्शंस लिखने पड़ेंगे बिकॉज जब हमने S के प्रोडक्शंस लिखे इंक्लूडिंग डॉट, अब वो डॉट कैपिटल A के आगे भी आया, कैपिटल B के आगे भी आया. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे डॉट नल नहीं लिखना है और डॉट नल यहाँ पे भी नहीं लिखना है. यू हैव टू सिंपली राइट डॉट. Is that clear? Please refer that previous video so you will understand better what this actually a dot means. Okay, now what we have to do, we have to shifting this each and every dot on the right hand side, then and only then we can reduce this substring with the help of non-terminal on the left hand side. So हम क्या check करेंगे, what we have to check, where the dot comes first. Here the dot comes first in the I0. Okay, so what we write, go to I0 capital S. What we write, go to I0 capital S. So on the right hand side जितने भी कैपिटल S होंगे उसके एक डॉट हमें शिफ्ट करना है. कहाँ पे? ऑन द राइट हैंड साइड. So on the right hand side only one S will be there, so we have to shift only one dot on the right hand side. So S dash tends to S dot. There is no other capital S in I0. Clear? Okay, now what we do, go to I0 capital A. Okay, whenever I apply this go to I0 capital A, one shifting will be there. So what is the production? S tends to A dot S-AaB. Okay, so S tends to A dot S-AaB. अगर मैं इस डॉट को शिफ्ट कर रहा हूं ऑन द राइट हैंड साइड और वो डॉट के बाद अगर कोई भी कैपिटल और नॉन टर्मिनल आता है तो वो नॉन टर्मिनल के प्रोडक्शंस मुझे लिखने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज कैपिटल बी होता, कैपिटल बी. सो व्हाट इज आवर प्रोडक्शन? S tends to A dot capital B. ओके, तो B के आगे भी डॉट है तो मुझे यहाँ पे B के प्रोडक्शंस लिखने पड़ते हैं. B के प्रोडक्शंस कौन से हैं? B tends to dot. बट ऐसा नहीं है, so I don't have to write anything here. So this is my new grammar, that is I2. Yeah, now कौन सा टर्मिनल और नॉन टर्मिनल है I0 में जो शिफ्टिंग बाकी है, जिसका शिफ्टिंग बाकी है? Now comes for B. So what we have to do, go to I0 capital B. If we apply go to I0 capital B, then what is the production? S tends to B dot SBBA. S tends to B dot SBBA. So this is different from all I1 and I2 and I0. That's why we are giving the name I3. Okay. Now you can see you don't have to apply go to function in this dot and this dot for this dot. Okay, because there is no symbols or no non-terminal or terminals symbols will be there. Okay, so I0 will be completed. Now we are applying a go to function in I1, but you can see here I1 में dot already right hand side पे पहुंच चुका है. Okay, तो हमें I1 देखने की जरूरत नहीं है. Next I2. Yes, I2 में अभी dot shifting बाकी है. So what we write, go to I2 किसके आगे डॉट है? स्मॉल a. So what we write, go to I2 small a. Okay, जब भी हम go to फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये डॉट एक शिफ्ट हो जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड. एट अ टाइम एक ही बार डॉट शिफ्ट होगा. ओके, सो व्हाट इज द प्रोडक्शन? S tends to capital A small a dot capital A B. Now you can see here that after shifting the dot there is
a non-terminal on the right hand side of the dot. जैसे हमने यहाँ पे किया था, S के आगे डॉट है तो हमने क्या किया, S के प्रोडक्शंस लिखे, A के आगे डॉट था तो A के प्रोडक्शंस लिखे, B के आगे डॉट था तो B का प्रोडक्शन लिखे. सिमिलरली जब हमने डॉट शिफ्ट किया तब कौन से नॉन टर्मिनल के सामने डॉट आया, आगे डॉट आया, A के सामने. So we have to write production from you can write from augmented grammar, that is A tends to dot here also. क्यों लिखा हमने, बिकॉज जब हमने डॉट शिफ्ट किया तब कैपिटल A that is नॉन टर्मिनल के आगे डॉट है, that is the reason I have to write the productions of A. A के प्रोडक्शंस अगर 5 होते तो मुझे 5 भी लिखने पड़ते. Okay, so where we are in I2A. I2 is completed. Now check, is there is the dot is shifted on the right hand side in I3? No. Okay, there are total 3 elements will be there. So what we do next, go to I3 small b. Okay, go to I3 small b. So when we shifting this dot on the right hand side, so what is the production, B B dot. Here you can see B B dot BA. तो जब हमने इस डॉट को शिफ्ट किया तो उसके राइट हैंड साइड पे एक नॉन टर्मिनल आ गया B. दैट इज द रीजन मुझे B के प्रोडक्शंस लिखने पड़े. अगर यहाँ पे टर्मिनल सिंबल होता तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी. इज इट क्लियर? Okay, now I3 is also completed. Now check I4 कि डॉट राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो चुका है, नहीं, बाकी. So where we are going right now? Go to I4 कैपिटल A. जिस भी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल के आगे डॉट होगा वह हमें गो टू फंक्शन अप्लाई करना है. So go to I4 कैपिटल A. Okay, so you can see here this dot will be shifted on the right hand side of A. Okay, but after this dot there is no non-terminal, there is a terminal symbol. That is the reason we are not writing anything here. अगर यहाँ पे कोई नॉन टर्मिनल सिंबल होता तो मुझे उसके प्रोडक्शन लिखने पड़ते. सो दिस इज अवर I6. सो यू कैन से I4 इज कंप्लीटेड. यहाँ पे डॉट ऑलरेडी लास्ट में पहुंच चुका है तो हमें इस प्रोडक्शन का गो टू फंक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. नाउ चेक इनटू द I5. यस, the dot is till there, it will not reach to the end of the production. So what we do, we apply go to function of I5 capital B. So go to I5 capital B. So what is the production? S tends to BB dot A, sorry, BBB dot A. So you can see after shifting the dot there is no non-terminal on the right hand side, so we don't have to write any production here. This is our I7 because it's a completely new production. Now I5 is already completed. Yes, completed. Now I6. Check I6 में लास्ट तक डॉट पहुंच गया, नहीं पहुंचा है. So what we do, go to I6 small b. Go to I6 small b and dot will be shifted on the right hand side. This is I8 because there is no similar production in any of the from I0 to I7. Okay. Now I6 of b is completed. Now we do I7 of small a. Go to I7 of small a. So you have to shift a dot from left hand side of the small a to the right hand side. So what is the production? S tends to BBBA dot. This is our I9 because it's a completely new production. Okay. Now check I8. The dot is already reached on the right hand side. I9. The dot is already reached on the right hand side. So we have to halt here. हमें यहाँ पे रुक जाना है. क्लियर है? नाउ व्हाट इज अवर स्टेप नंबर 3 टू कंप्यूट फॉलो फंक्शन. हमारे पास ग्रामर क्या था, ओरिजिनल ग्रामर दिस वन, S टेंस टू S-AaAB, S टेंस टू S-BbBa, A टेंस टू null, B टेंस टू null. ओके, तो हमें फॉलो फंक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो आपको पता होगा हमने ये ऑलरेडी टॉप डाउन पासिंग में किया है. कितने नॉन टर्मिनल्स के फाइंड आउट करने होंगे, एक तो S, एक A एंड एक B. फॉलो फंक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं, अगर A का फॉलो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, अगर उसके फॉलो में ऑन द राइट हैंड साइड इफ इट इज अ टर्मिनल सिंबल, डायरेक्टली राइट डाउन द फॉलो ऑफ A इज कैपिटल A,
the follow of A is small b, small a. अगर A के इमीडिएट राइट में A को अगर फॉलो कोई नॉन टर्मिनल कर रहा है तो उसका हमें फर्स्ट लिखना है. ये दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन टॉप डाउन पार्सिंग दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट फर्स्ट एंड फॉलो. ओके, बट हियर यू हैव टू ओनली कंप्यूट फॉलो फंक्शन. ओके, सो फॉलो फंक्शन किसका फाइंड आउट होगा? S, A और B का. ओके, यू कैन सी राइट हैंड साइड पे S कहीं पे भी नहीं है, सो वी सिंपली पुट डॉलर. Okay, in the starting symbol of the grammar we mandatory we have to put the dollar symbol that we already know, but on the right hand side you can see there is no S. I am not including this cap S distance to S. You have to check only the original grammar. Original जो भी आपका grammar था before augmented grammar वही आपको check करना है. Okay, okay, next A का अगर हम फॉलो फाइंड करेंगे, A की इमीडिएट राइट में कौन है? स्मॉल a. तो स्मॉल a इज अ फॉलो ऑफ A. सिमिलरली A के राइट में यू कैन सी टर्मिनल सिंबल है स्मॉल b. सिंपली यू हैव टू राइट स्मॉल b. राइट हैंड साइड पे जितने भी कैपिटल A है उसका फॉलो आपको फाइंड आउट करना है, बट टोटल 2 A's आर देयर. द फॉलोज आर टर्मिनल सिंबल, सो वी आर डायरेक्टली राइटिंग A and B. ओके, सिमिलरली व्हाट इज द फॉलो ऑफ B? You can see on the right hand side of the production here. What is the follow of B? First one is small b and second one is small a. So what is the answer? A and B. Okay. So the last step will be constructing SLR parsing table. That is somewhat difficult. That is not so hard. Just see the steps. So this everything we are already learned in the previous slide. Okay, that what is step number 2, canonical set of LR0 items, how to compute follow function. Now the final step, that is step number 4, that construct the SLR parsing table. This is important. In examination हमें सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाता है, हमें स्ट्रिंग को पास करने के लिए नहीं कहा जाता. Okay, so this table is important because the examiner or the paper checker will examine this table only. Okay, now how to fill this table? It is very simple. Just see. What is S? S means shift, R means reduce. We are already giving the numbers like for the first R0, for the second production R1, third production R2, R3 and R4. This R represents the reduce. How if R0 will be there, then we have to reduce S with S dash. If R1 will be there, then we have to reduce capital A, with the help of this non-terminal S. Okay, so reductions are there in bottom-up parsings, derivations are there in top-down parsing. Okay, now how to fill this table? In any of the example, in the state of I1 and in action dollar, you simply have to write except. Why? I will explain you later on. Okay, now how to fill this table? Just check here what it gives. I0S will gives I1. So where is I0? Here. Where is capital S? Here. What it gives? I1. So in goto you have to write only 1, not I1. But this particular, अगर ये productions action में आता तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं? Shift लिखेंगे. That is S1, S2, S3. अगर goto में S1, S2 नहीं लिखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ numbers लिखना है 1, 2, 3. Just see. I0S, what we have to write? 1. In I0S, we simply write here 1. Simple. Next, I0 capital A, what we have to write? I2. In I0 capital A, but it is a goto. That is the reason why what we have to write only 2, not I2. Clear? Next, in I0 capital B, what we have to write? What is the answer? I3. So in I0 capital B, what we have to write? Only 3. Okay. Next, go to I2 small a. Now this is an action part. This I2 small a. What it gives? I4. In action, you have to write shift 4. But in goto, you simply have to write integer, that is
1 2 3. Okay, so what is our next step? I2 small a gives I4. I2 small a, what is the answer? S4. Next, I3 small b, what it gives? 5. I3 small b, what we have to write? S5. Next, I4 capital A, what it gives? 6. I4 capital A, that is in go to part. So what we have to write? Only 6. Next, I5 capital B, what it gives? 7. I5 capital B, what it gives? 7. Next, I6 small b, what it gives? 8. I6 small b, it's a accent part, so we have to write S8 instead of 8. Okay. Next, go to I7 small a, it gives 9. I7 small a, what it gives? 9, so we have to write here S9. Okay, so this is how we are putting the shift in this SLR parsing table. Now how to put this reduce? For that you have to check where the dot is already reached on the right hand side. Dot right hand side पे कौन से productions में चले गए हैं. For example, you can see यहाँ पे dot last में चला गया है. In I0 is also, this is most important. सब ये I0 भूल जाते हैं कि हाँ I0 में भी dot last में पहुंच चुका है. A tends to dot, B tends to dot. Similarly, S tends to S dot. Okay, reduction हमें कब लिखना है? जहाँ भी productions आए, जहाँ ऑलरेडी लास्ट ऑन द राइट हैंड साइड लास्ट में डॉट पहुंच चुका है. I2 में नहीं गया है, I3 में भी नहीं गया है, I4 में है, A tends to dot. ओके, तो यहाँ पे मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा. नेक्स्ट, I5 में डॉट है, B tends to dot. सिर्फ इसके लिए मुझे रिडक्शन करना होगा. I6 में डॉट लास्ट में नहीं पहुंचा है, I7 में भी डॉट लास्ट में नहीं पहुंचा है, I8 में पहुंचा है, I9 में भी पहुंच गया. ओके, सो फॉर रिडक्शन व्हाट वी हैव टू चेक? डॉट ऑन द राइट हैंड साइड लास्ट में कौन से प्रोडक्शंस में पहुंचा है, दैट वी हैव टू एग्जामिन फ्रॉम I0. हाँ, I0 को स्किप मत करना, क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल में I0 में लास्ट में डॉट था ही नहीं, बिकॉज A tends to null, B tends to null था ही नहीं. ओके, नाउ रिडक्शंस लिखने कैसे हैं? हाउ टू राइट इन द पासिंग टेबल. नाउ यू कैन सी इन I0 मीन्स I0 में मुझे रिडक्शंस लिखने हैं. कहाँ? कौन सा सिंबल में? A tends to dot कौन से नंबर का सिंबल है? R3. A tends to dot, that is A tends to null, कौन से प्रोडक्शन है? R3. तो I have to write R3 in I0. कहाँ पे लिखना है? तो A के फॉलो में. What is the follow of A? Small a and small b. तो small a और small b में मैं क्या लिखूंगा? R3. Is that clear? This is only important. यहीं पे स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं. फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पहले तो हमें क्या चेक करना है? सारे कैनोनिकल जब हमने फाइंड आउट किया कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ एलआर 0 आइटम्स, तो लास्ट में डॉट कहाँ पहुंच चुके हैं, यू कैन चेक. ओके, मोस्टली I0 में नहीं होता है. I0 में कब होगा? जब नल होगा ग्रामर में. ओके, सो I0 में नल पहुंच चुका है, यू कैन सी यहाँ पे भी पहुंच चुका है. देन हियर इन I4, इन I5, इन I8, इन I9. सो ये सारे के सारे स्टेट्स में क्या आएंगे? रिडक्शंस आएंगे. क्लियर? तो फर्स्ट कहाँ पे आया? हम I0 को चेक कर रहे हैं. डॉट है लास्ट में, यस है. तो I0 में मुझे एंट्री करनी है. क्या एंट्री करना है? तो भाई A tends to dot कौन सा नंबर का रिडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है? तो R3. ओके, तो R3 रखना कहाँ है? तो रखना है आपको A के फॉलो में. A के फॉलो कौन से थे? A एंड B. तो I0 के A और B में मैंने क्या रख दिया? R3. नेक्स्ट चेक करते हैं. लास्ट में डॉट कहाँ पहुंच चुका है? यहाँ पे. B tends to dot. So in I0 B tends to dot कौन सा रिडक्शन नंबर है हमारा? R4. ओके, तो हमें ये R4 रखना कहाँ है? तो B के फॉलो में रखना है. B के फॉलो क्या है? A और B. A और B में मैं क्या रखूंगा? R4. Here also R4. Here it's a conflict, that is reduce conflict. I will explain you later on after completing this example. ओके, ये दो हो गया. नेक्स्ट, यहाँ पे क्या डॉट पहुंच चुका है? दैट इज द रीजन इन I1 what we have to write here except.
कैन चेक I1 के I1 यहाँ पे डॉट पहुंच चुका है। ओके, ये प्रोडक्शन कौन सा है, तो भाई R0 है। क्लियर, तो R0 एस का हमारे पास फॉलो है नहीं है। क्लियर, हमने ये प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस क्यों किया था, एस टेंस टू एस, इट्स एन ऑगमेंटेड ग्रामर। और इन बॉटम अप पार्सिंग हम स्ट्रिंग से लेके कहां तक जाते हैं, और द स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर। दैट इज द रीजन एस टेंस टू एस इन I1। कोई भी एग्जाम्पल अगर आप कर रहे हो, SLR हो या CLR हो, इन I1's डॉलर यू हैव टू राइट एक्सेप्ट। क्लियर, ओके। नेक्स्ट डॉट कहां पहुंच चुका है, यू कैन सी इन I4। ओके, तो हमें एंट्री कहां करनी है, I4 में करनी है। क्या एंट्री करनी है, तो A टेंस टू डॉट, कौन सा रिडक्शन नंबर है, तो R3। हमें R3 रखना है I4 में, कहां पे, A के फॉलो में। दैट मीन्स इन A एंड B इन I4 व्हाट आई हैव टू राइट, R3। सिंपल। नेक्स्ट डॉट कहां पहुंच चुका है, तो I5 में। तो मुझे एंट्री कहां करनी है, स्टेट I5, दैट इज हियर। ओके, B टेंस टू डॉट, कौन सा रिडक्शन नंबर है, दैट इज रिडक्शन नंबर 4, R4। R4 मुझे कहां रखना है, तो B के फॉलो में। व्हाट इज द फॉलो ऑफ B, A एंड B। क्लियर, तो I5 के A और B में मैं क्या रखूंगा, R4। क्लियर, I6 में लास्ट में डॉट है, नो। I7 में है, नहीं है। I8 में है। सो यहाँ पे रिडक्शन पॉसिबल है। सो इन स्टेट I8 what is this production reduction number, reduction number is R1। मुझे R1 रखना है कहाँ, S के फॉलो में। what is the follow of S, डॉलर। I8 के डॉलर में मैं क्या रखूंगा, R1। क्लियर, लास्ट वन इज दिस वन, S टेंस टू कैपिटल B स्मॉल b, B A डॉट, यहाँ पे लास्ट में डॉट पहुंच चुका है। सो इन I9 आई हैव टू एंट्री इन I9। ओके, S टेंस टू BBA कौन सा रिडक्शन नंबर है, R2। So I have to put this R2 in the follow of S. What is the follow of S? डॉलर। I9 के डॉलर में मैं क्या रखूंगा, R2। So here we complete the SLR parsing table. With the help of this SLR parsing table, अगर हमें कोई स्ट्रिंग दी गई होगी तो we have to parse, तो वहां पे हमें रिडक्शन और शिफ्टिंग काम लगेंगे। So for reduction, how to reduce, how to pass the tree, how to pass the string, for that you must have to watch the previous video of SLR parsing। okay, इसमें कोई सम हमने पार्सिंग के लिए लिया नहीं है, बिकॉज एग्जामिनेशन में स्टेप नंबर 4 तक ही पूछा जाता है, दैट इज कंस्ट्रक्ट SLR parsing table। okay, now here R3 and R4 are conflict, that is reduce conflict। one is shift reduce conflict, it may be possible shift reduce conflict हो सकता है, एक हो सकता है reduce conflict, क्लियर, और एक हो सकता है shift conflict। okay, so here we can see there is a reduce conflict, that is the reason this grammar is not SLR1। okay, अगर कोई conflict नहीं होता then we can say the given grammar is SLR। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, check whether the grammar is SLR1 or not। वहां पे अगर पार्सिंग टेबल में कोई conflict ना हो, there is no shift reduce conflict, there is no shift conflict, there is no reduce conflict, then we can say the given grammar is SLR। is it clear? और कोई एग्जामिनेशन में तो नहीं, बट वाइवा में अगर पूछ ले ये ब्लैंक स्पेस क्या डिनोट करती है, तो ये ब्लैंक्स, दिस ऑल ब्लैंक स्पेस डिनोट्स एन एरर। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू क्रिएट SLR पार्सिंग टेबल। ओके, एक एग्जांपल है नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है I0 में। लेट्स सी दैट। ओके, for this example I don't have the full explanation or full solved example, but I have to explain how to construct
I0 बिकॉज आपका अगर I0 गलत हुआ दैट मीन्स पूरा सम आपका गलत हो जाएगा. ओके, ऑगमेंटेड ग्रामर इज वेरी सिंपल. व्हाट इज आवर स्टार्टिंग सिंबल हियर? S. सो हमने सिंपली लिख दिया S टेंड्स टू S और सारे प्रोडक्शंस को अलग कर दिया. फॉर एग्जांपल S टेंड्स टू AA, S टेंड्स टू BAC, S टेंड्स टू BBA. Okay, then A tends to D, B tends to D. What is our step number 2? Canonical collection of LR zero items. तो वो केस में क्या होगा? आप सबसे पहले डॉट लगाओगे यहाँ पे. क्लियर? तब आपको पता चला कि हाँ डॉट लगाने के बाद डॉट किसके आगे आ गया? कैपिटल S के आगे आ गया. तो S के सारे प्रोडक्शंस मुझे लिखने हैं. S के प्रोडक्शंस कितना है? 1, 2, 3. तो सारे प्रोडक्शंस में लिखूंगा इंक्लूडिंग डॉट ऑन द राइट हैंड साइड. लिख दिया 1, 2 and 3. अब क्या? You can see after writing the production of S, there is only one non-terminal, that is capital A जिसके आगे डॉट है. तो मुझे यहाँ पे सिर्फ A का प्रोडक्शन लिखना है. A का प्रोडक्शन क्या है? With the help of that dot, A tends to dot D. इज दैट क्लियर? एग्जाम में सारे स्टूडेंट्स क्या करके आते हैं? B टेंड्स टू डॉट डी भी लिख के आता है, बट इन I0 B टेंड्स टू डॉट डी नहीं आएगा. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो डॉट ऑन द प्रीवियस ऑफ कैपिटल B. दैट इज द रीजन यहाँ पे B टेंड्स टू डॉट डी नहीं आएगा. अब आप बोलोगे सर ये प्रोडक्शन तो फिर दिया क्यों है? सो एक टाइम आएगा जब आप इस B को शिफ्ट, इस डॉट को शिफ्ट करोगे. दैट इज I0 स्मॉल b. देख लेते हैं वो भी. एक टाइम आएगा व्हाट वी आर गोइंग टू शिफ्टिंग I0 स्मॉल b. ओके, पहले ये दो डॉट हमें शिफ्ट करना है. उसके बाद तो जब हम डॉट को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? 2b है I0 में जिसके आगे डॉट है. तो पहले मैंने क्या लिखा? B डॉट AC. एक डॉट शिफ्ट हो गया. सेकेंड डॉट को भी मुझे शिफ्ट करना है. दैट इज S टेंड्स टू B डॉट BA. क्लियर? जब मैंने डॉट शिफ्ट किया तो A के आगे भी डॉट आया, B के आगे भी डॉट आया. Then I have to write the production of A also and B also from augmented grammar including dot. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A और B दोनों प्रोडक्शंस आ गए, भले I0 में वो नहीं थे. ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन ये गलती करते हैं कि B टेंड्स टू डॉट डी भी लिख देते हैं. वो आपको नहीं लिखना है. सो प्लीज कीप इन योर माइंड. ओके, thank you. If you have any query regarding this video, please comment. Thank you.